इधर आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे स्पोर्ट्स की। फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं और कल तो कमाल ही हो गया। क्रोएशिया और जापान का मैच अगेन प्रूव टू बी अ वर्ल्ड कप मैच कि जहां पे क्रोएशिया ने शूट आउट्स पे शिकस्त दी जापान को। ऑल्दो के जापान ने जो है वो खाता खोला था और पहला गोल जापान ने किया। उसके बाद क्रोएशिया केम फ्रॉम बिहाइंड, उन्होंने लेवल किया। मैच में कई मौके आए जहां पे लगा कि अब गोल हो सकता है, तब गोल हो सकता है, लेकिन फिर हुआ ये कि एक्स्ट्रा टाइम पे गया, एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल नहीं कर सका। एंड देन हुआ ये कि शूट आउट्स पे गया एंड शूट आउट्स पे लग नहीं रहा था कि ये गोल करने आए, बल्कि लग रहा था कि ये गोल मिस करने आए। और फाइनली जिसने कम गोल मिस किए वो जीत गया, दैट वाज क्रोएशिया। खासतौर पे जो क्रोएशियन गोलकीपर थे उन्होंने तो कमाल कर दिया और उन्होंने जो है पेनल्टी बचाई, जिसके बाद क्रोएशिया आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स। ये तो हुआ कांटे का मैच। दूसरे मैच बिल्कुल भी कांटे का नहीं था, वो बहुत ही आसान था। ब्राज़ील ने साउथ कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी, धड़ाधड़ गोल दागे और ये जो गोल दागने में सारे के सारे ही आगे रहे। सबसे मज़े की बात ये, विद इन फर्स्ट 36 मिनट्स ऑफ द मैच ब्राज़ील ने 4 गोल कर दिए थे। इसके बाद बेचारा साउथ कोरिया कैसे ही उठ पाता। तो इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट अब्दुल मोईद। मोईद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जो क्लिफ हैंगर था क्रोएशिया वर्सेस जापान। और मतलब माई हार्ट वॉज विद जापान, लेकिन हार्ट इज़ ब्रोकन। बाय द वे कल तो 2 मरतबा दिल टूट गया। पहले सुबह मार गए पिंडी टेस्ट, रात में जी जापान इज़ आउट। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? जापान को अपर एज हासिल था, बट उन्होंने पेनल्टीज मिस की एंड दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर दैट। जी सलामुकुम, थैंक यू। ओवरऑल देखें तो इट वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जापान जिस तरह आया था फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस, एक्चुअली जापान की वजह से जर्मनी गॉट नॉक्ड आउट. So Japan was a surprise package in the knockout stages, or the way they played yesterday was amazing again. Japan last match जो Japan का था, Japan beat Spain 2-1 to get into these knockout stages. लेकिन coming against Croatia, who have players like Perisic, Luka Modric, and then Lovren, such experienced players. Let's not forget, Croatia was the finalist of 2018 World Cup. They played the final against France and eventually they lost. So they have a lot of experience in the team, though they were not playing up to their mark. Like in Croatia, the style of play, this team does not score a lot of goals. They're solid at the back, or what they do is they score one goal or 2 goals and they sit back and they just enjoy the game and move the ball around. So hats off to Japan actually for giving them such a good competition yesterday. I think their defense was good. Japan, the way Japan played, they played on the counter attack. They had good defense players, like experienced players, Premier League players like Tomiyasu, who plays for Arsenal. Or in the start, in the first half, it was all Japan. That's why they scored. In the second half, Croatia came back. It was a superb goal by Ivan Perisic. Right. The header, just ball under eye, such a precise header. And at the end of the day, all about the nerves. Yes, Japan, absolutely. It's all about the nerves. मोहित, तो जैसे कि आपने कहा कि क्रोएशिया सिट्स बैक आफ्टर स्कोरिंग 1 or 2, लेकिन ब्राज़ील बिल्कुल भी सिट बैक नहीं करता भाई साहब। 1, 2, 3, 4 ग्रुप ऑफ 16 में अगर आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं और आपको आगे से सोचें आप अगली टीम का कि 4 गोल पहले 36 मिनट में पड़ जाएं, क्या ही रह गया था फिर साउथ कोरिया के लिए? प्लीज फ्यू वर्ड्स फॉर ब्राजील. Brazil, like I've said it a lot of times since the World Cup has started. This time around, there are 2 favorite teams, Brazil and England. And Brazil are living up to their expectations the way they're playing right now. Richarlison is in amazing form. It was good to see Neymar back into the Brazilian shirt after the injury. And then they're playing very, very, very sleek football, classy football. They're enjoying their game.
They have one of the best defenses in the tournament. They have the best attacks. They have so much quality, even on their bench with Gabriel Martinelli, with Rodrigo, with Vinicius Jr., with Rafinha, with Neymar, with Richarlison. You can expect them to score a lot of goals. Right. Okay. So what do you make of it? अब ब्राज़ील वर्सेस क्रोएशिया होने जा रहा है. ऑब्वियसली ब्राज़ील को अपर हैंड तो होगा, लेकिन ये दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम. एक गोज ऑल आउट, एक एज यू सेड सिट्स बैक. तो आर वी गोइंग टू सी एन ऑफेंस वर्सेस डिफेंस, या फिर क्रोएशिया को लगता है कि दे हैव टू चेंज देयर गेम अगेंस्ट अ साइड लाइक ब्राज़ील? I don't think Croatia, since last, we have seen it since last 8 years. They've stick with a plan of playing, sitting back after scoring 1-2 goals, and they usually hit you on the counter. I think they'll go with the same plan. While on the other hand, the Brazilian team, they'll play their own game, the swift passing game, playing offensive, because what is happening right now, they have players like Danilo, Marquinhos, who's their centre back, who like to come back, and Thiago Silva sits back and covers around. They have the experience as well as they have the young stars. So I think it's going to be a good match, but eventually, the way Brazil is playing and the way they've been set up, it's just not about this tournament. They've been working on this since 2018, since Tete took over Brazilian team, their coach, and they've worked tremendously since then. So I think this is going to it's going to be hard to beat Brazil this time around in this World Cup. And what about today's fixtures? क्योंकि for a football fan, even if it's a seasonal मौसमी fan, ये आज के दो मैचेस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये रिजल्ट जो हो ना क्वार्टर में हो स्पेन वर्सेस पोर्टुगल. डू यू सी लाइक दैट, या फिर मोरक्को या स्विट्जरलैंड में से कोई अपसेट करता नजर आ रहा है? Thinking this World Cup is full of surprises. Overall, football has changed since the last 3-4 years. If you do not show up on the day, अगर आप on that particular day, अगर आपकी वो intensity नहीं है, आपकी वो determination नहीं है, and you're wrong on your tactics, तो any team can beat any team in the world. So this is what's happening right now. So Morocco is again a surprise package in the round of 16. They've played extremely well. Hakim Ziyech, Hakimi, they have some good players. On the other hand, Spain started off very well, beating Costa Rica 7-0. Then they drew 1-1 with Germany, and then they lost their last match against Japan 2-1. So ये downhill चल रहे हैं, लेकिन I feel Spain has a good squad. It'll be a good match. Luis Enrique, very experienced coach. The way he's playing Rodri, a defensive midfielder, as a centre back, so that he can allow Busquets, Pedri, and Gavi that space to move around a lot. So I think it's going to be a good match, but hopefully Spain will come out with the win. All right. बहुत शुक्रिया मोहित, and we wish to have you back. तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप मैचेस और सारे फैंस जो हैं वो एक्साइटेड होंगे